Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q2 FY24 earnings conference call of Kamdhenu Group. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Satish Agarwal, Chairman and Managing Director of Kamdhenu Limited. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, and a very warm welcome to everyone present on the call. Along with me, I have Mr. Harish Agarwal, Group CFO, Mr. Saurabh Agarwal, MD of Kamdhenu Ventures Limited, and SGA Advisors, our investor relation advisors. We have uploaded our results and investor presentation for the quarter on the stock exchanges and company's website. Hope everyone had a chance to go through the same. We have delivered a strong performance for both the steel and paint business in Q2 and H1 FY24. Coming to our steel business first, that is Kamdhenu Limited. During H1 FY24, revenue for the company stood at 393.6 crore, reflecting a growth of 3% on year-on-year. Total brand turnover for H1 FY24 stood at 11,935 crore as compared to 10,225 crore in H1 FY23. That is a growth of 17% year-on-year basis. In India, the demand for TMT steel bar is on an upward trajectory, spurred by robust construction activities in both urban and rural areas. These bars are favored for their strength and durability, making them essential for infrastructure development and real estate projects. As the nation continues to invest in modernization and building resilient structures, the demand for TMT bars is expected to maintain its strong growth momentum. What distinguishes us from our competitors is our franchisee and dealer-driven model. With a network of 8,500 plus dealers and a strong presence through our large number of franchisees, our reach continues to expand significantly while being asset-light. We also have a strong brand name when it comes to providing superior quality products, further emphasizing the company's commitment to excellence. We have successfully navigated through short-term challenges by leveraging our capabilities while maintaining unwavering efficiency, and will continue to do so going forward. Now, I would like to hand over the call to Mr. Saurabh Agarwal to give you an update on the paint business. Over to you, Mr. Saurabh. Thank you and good afternoon, everyone. I would like to give you a brief on the paint business, that is Kamdhenu Ventures, for H1 FY24. In H1 FY24, we continue to see strong momentum in the paint business. Revenues grew by 7% year-on-year to rupees 127.5 crore. EBITDA stood at rupees 8.9 crore, a significant turnaround compared to rupees minus 0.5 crore during the same time last year. This can be primarily attributed to our constant effort to improve our sales mix with a large focus on premium products. Demand for paint in steel has witnessed remarkable growth in recent years.
This surge can be attributed to several factors, including a booming real estate sector, increased urbanization, and a growing middle class population with higher disposable income. Additionally, the government's focus on infrastructure development and affordable housing schemes has further fueled the demand for paint. As consumers seek to enhance the appearance and longevity of their products, there is a growing preference for innovative and eco-friendly paint solutions. With a diverse range of choices and the construction and renovation sectors on the rise, the Indian paint industry is poised for continued expansion in the years ahead. Kamdhenu Ventures in H1 FY24 has raised funds amounting to rupees 65.25 crore through preferential issuance of qualified institutional buyers. This fund-raising endeavor served the crucial purpose of injecting capital into Kamdhenu Color and Coating Limited, our wholly owned subsidiary. A significant portion of the raised funds, rupees 57.76 crore, has been invested in our subsidiary by the way of subscription of rupees 57.76 lakh 0.01% optional convertible redeemable preferential shares of face value rupees 10 each at an issue price of rupees 100 per share of KCCL. The funds have been utilized in several purposes, which include meeting the working capital requirement of the paint business and the reduction in working capital debt. To further align with our commitment of recognition and rewarding our shareholders, thus the Board of Directors of the company had approved the issuance of fully paid-up bonus equity shares of rupees 5 each to the shareholders of the company in the proportion of 1:1. The bonus equity shares shall rank pari passu. We at Kamdhenu Ventures continue to focus on underserved smaller towns through our extensive distribution network. As the economy grows and these cities start urbanizing, the demand for paint-related products would rise with increased infrastructure projects. Our strategy would be to forge partnerships with numerous dealers to expand our reach across several geographies in India. We would also continue to improve our sales mix through the premiumization of our product portfolio by launching a larger array of higher quality, innovative, and premium products while expanding into newer segments. The company has strategic planning of forging partnerships with numerous new dealers across India, augmenting its production capabilities by adding new plants, tapping under-penetrated markets, premiumization of product portfolio through the launch of innovative products, and expanding into new segments and expanding nationwide visibility. Altogether, Kamdhenu Paint has envisioned itself to become the preferred choice of customers. Our innovative and expensive product portfolio would be a key contributor to growth and help unlock further potential in the company for years to come. With this, I would hand over the call to our Group CFO, Mr. Harish Agrawal, for the financials. Thank you all. Participants, please hold on. We have got the line disconnected with the management. Please hold on. I'm trying to reconnect back with them. Yes, sir. We can move ahead. Participants, we have the management on the line. Sir, we can go ahead. Thank you, sir. First,
I would like to take you through the financials of the steel business. Now, I would like to share the highlights for Q2 FY24. Our steel volume from franchisee route has stood at 7.51 lakh metric ton in Q2 FY24 as compared to 6.82 lakh metric ton in Q2 FY23, year-on-year growth of 10%. Our TMT volume from own facility stood at 29,398 metric ton in Q2 FY24, registering a growth of 10% year-on-year. Turnover for Q2 FY24 stood rupees 5,804 crores as compared to 4,916 crore in Q2 FY23, witnessing a growth of 18% year-on-year. Royalty income through franchisee stood at rupees 29.6 crore in Q2 FY24 as compared to 26.2 crore in Q2 FY23, a growth of 13% year-on-year basis. Revenue from own facilities stood at 155.4 crore in Q2 FY24 as compared to 155.8 crore in Q2 FY23, having almost same level. Total revenue stood at 185 crore in Q2 FY24 as compared to 191.3 crore, registering a degrowth of 3% year-on-year, mainly on account of reduction in B2B sales. Our EBITDA stood at 13.3 crore in Q2 FY24 as compared to 12.2 crore in Q2 FY23, a growth of 9% year-on-year. Profit after tax stood at 10.2 crore for Q2 FY24 as compared to 8.2 crore in Q2 FY23, a growth of 24% year-on-year. Now, I would like to share the highlight for H1 FY24. Our steel volume from franchisee route has stood at 15.68 lakh metric ton in H1 FY24 as compared to 14.12 lakh metric ton in H1 FY23, a growth of 11%. Our TMT volume from own facility stood at 61,491 metric ton in H1 FY24, registering a growth of 20% year-on-year. Total brand turnover for H1 FY24 stood at 11,935 crore as compared to rupees 10,225 crore in H1 FY23, a growth of 17% year-on-year. Royalty income through franchisee stood at 61.5 crore in H1 FY24 as compared to 53.7 crore in H1 FY23, a growth of 15% year-on-year. Revenue from own facilities stood at 331.6 crore in H1 FY24 as compared to 308.4 crore in H1 FY23, registering a growth of 8% year-on-year. Total revenue stood at 393.6 crore in H1 FY24, registering a growth of 3% year-on-year. Our EBITDA stood at rupees 29 crore in H1 FY24 as compared to 27.6 crore in H1 FY23, a growth of 5%. Profit after tax stood at 22.2 crore for H1 FY24 as compared to 18.2 crore in H1 FY23, a growth of 22% year-on-year basis. Let us go through the numbers of Kamdhenu Venture Limited now. Kamdhenu Venture reported strong performance during the second quarter and half year ended fiscal 24. First, to give you the highlight for Q2 FY24, revenue for the quarter stood at 65.8 crore as compared to 64.4 crore in Q2 FY23, a growth of 2% year-on-year. EBITDA stood at 4.9 crore as compared to 0.7 crore last year, a large increase due to an improved product mix coupled with improving operational efficiencies.
Our PAT has turned positive to 3.4 crore in Q2 FY24. Coming to the highlight for H1 FY24, revenue for H1 FY24 stood at 127.5 crore as compared to rupees 119.1 in H1 FY23, a growth of 7% year-on-year. EBITDA stood at rupees 8.9 crore as compared to minus 0.5 crore last year, indicating turnaround in the paid business. Our PAT stood at 5.6 crore, which was minus 5.5 crore in H1 FY23. Average selling price per kg or liter for H1 FY24 stood at rupees 88. Water-based product contributed 83%, powder-based product 6%, and solvent-based product 11%. With this, I would like to open the floor for the question and answer. Thank you, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ms. Priyanka Singh from Atidhan Securities. Please go ahead, ma'am. Yeah, thank you. So I had few questions on the steel business. Firstly, how are we planning to increase our franchisee and dealers network? We have planned to increase the capacity through the franchisee route, which is at present, we have 40 lakh metric ton capacity of TMT bar, which we are going to increase to 50 lakh metric ton very soon. And we are continuously increasing our dealer network across India by appointing new dealers. Okay. And what are our plans to increase our penetration in South and West regions? Can you repeat the question? So basically, what are our plans to increase our penetration in South and West regions? Yeah, we have the plan to increase the capacity of the franchisee unit, and we are also looking for the other franchisee unit to add the capacity in that region. Okay. Okay. And why has there been an increase in the short-term debt in the balance sheet? No, it's a 1 crore against the FDR. Sorry, sir, 1 crore? Kamdhenu Limited Steel Company is a zero debt company. There is no term loan, there is no working capital. But in the balance sheet, you are seeing a limit of a borrowing of 1 crore. This is against the FDR. Okay, got it. Only limit against FDR. Okay. And lastly, what would be the target brand turnover for FY24? We are targeting brand turnover of around 25,000 crore in FY24. Okay. That was helpful. Thank you. Thank you, ma'am. Participants who wish to ask questions may press star and 1 on their touchtone phone. The next question is from the line of Mr. Pankaj Jain from Mahavir Investments. Please go ahead, sir. Hi, sir. Thank you for the opportunity. So my first question is, with the overall slowdown in household spending and the weak demand environment across the country, what are the strategies which the company has adopted to address the same? About paint or business? Paint or steel? Steel. Slow down. ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आप स्टील और पेंट दोनों के बारे में समझना चाहते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर कोई सेगमेंट के बारे में? सर मेजरली पेंट में देखिए, मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन तो है, और जैसे Q2 में आपने देखा होगा पूरे इंडिया में एक्सेसिव बारिश इस बार रही है मानसून में, और काफ़ी जगह फ्लडिंग भी था, तो डेफिनेटली डिमांड तो इफेक्ट होती है। तो कामधेनु का जो फोकस है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, हम लोग अपना जो
प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो मेरी बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव हुई है कि जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं मेनली उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है वो ग्राउंड के ऊपर जितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू एजुकेशन टू द पेंटर्स और डीलर्स और एंड कस्टमर्स तक, जिस तरह से भी हम उसको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। और काफ़ी जैसे हमने पेंटर्स का क्लब बनाया हुआ है तो उसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है और उसमें जैसे उनके बहुत सारे इंसेंटिवाइज भी हम लोग करते हैं पेंटर्स को। तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और टीवी नेटवर्क के ऊपर हमारा उतना फोकस नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो टायर 2, टायर 3, टायर 1 सिटीज़ में है। मेजर हमारा शेयर टायर 2 सिटीज़ में है और टायर 1 में है भी प्रेजेंस हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेन फोकस है वहाँ पे ग्राउंड पे जो हमारे फील्ड की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, इसके अलावा हमारे रिटेलर्स हैं, वो कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और ठीक रीजनेबल कॉस्ट पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आई थिंक वो वर्क कर रहा है इसमें। समझ गया सर। दूसरा क्वेश्चन था सर, हमने जो ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस दिया है ऑफ अराउंड 1000 करोड़ फॉर FY28 इन पेंट बिजनेस, सर हमारा ये स्ट्रैटेजीज आपने बताया, बट सर लॉन्ग टर्म में हम ये कैसे अचीव करेंगे? लाइक इसका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, एक्विजिशन इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, मार्केट शेयर गेन रहेगा? हाउ डू यू प्लान टू रीच दैट 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय FY28? देखिए, ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का हमारा टारगेट है और इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ का हम लोग लेके चल रहे हैं। जिस एरियाज में हमारी प्रेजेंस वीक है वहाँ पे हम अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में, क्योंकि हमारे पास अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नॉर्थ में राजस्थान में अवेलेबल है। तो यहाँ से साउथ में हमारे को जो ट्रांसपोर्टेशन करना होता है पेंट का, उसकी कॉस्ट हमारे को ज़्यादा आती है। तो उसके लिए कुछ अभी मार्केटिंग से हम वहाँ पे मार्केट डेवलप कर रहे हैं साउथ में, जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है या और एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे हम लोग मार्केट डेवलप कर रहे हैं और जैसे ही वहाँ पे मार्केट डेवलप होगी फिर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन यूनिट का हम एसोसिएशन वहाँ पे करेंगे, जिससे वहाँ पे लोकली हम लोग मटेरियल बना के वहाँ पे दे पाएँ। और दूसरा यह है कि जहाँ पे अभी हमारा और इंटेंसिफाई कर रहे हैं रिटेल नेटवर्क को, नए नए डीलर्स नए नए एरियाज में और बढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स डीलर नेटवर्क भी बढ़ेगा, ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़ेगा और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इसमें ऐड करेंगे अपने इसमें। तो उसका भी प्लानिंग है कि किस तरह से हम लोग कुछ इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू फंड्स इसमें जनरेट करके और एक प्लांट भी हम लोग कहीं सेंट्रल इंडिया में लगाएंगे कि जहाँ से हम सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया जो है पूरा कवर कर पाएँ। तो इस तरह से इसमें वर्किंग कर रही है। 1000 करोड़ के लिए कंपनी पूरा रोडमैप बना के चल रही है, डिटेल वर्किंग कर रहे हैं और होपफुली जो है इसी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसी पे चल भी रहे हैं। समझ गया सर। लास्टली कल ये जानना था कि जो न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, लाइक एस्टैब्लिश प्लेयर्स तो है ही पेंट में, बट द न्यू एंट्रेंट्स जो which are trying to hold foot like Grasim and JSW, they are also entering the paint business with aggressive pricing and strategies और वो भी डीलर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो उसको हम लोग फाइट करने के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? मीन्स व्हाई विल वन प्रेफर आवर पेंट्स ओवर द अदर? देखिए, जो ग्रेसिम या JSW बड़े प्लेयर हैं और मैं समझता हूँ उनका जो कंपटीटर रहेगा वो एशियन पेंट या जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ उनका कंपटीशन रहेगा। कामधेनु का स्टील और पेंट में ग्रास रूट लेवल पे हमारी पकड़ रहती है और हमारा जो लॉयल्टी है कस्टमर की या प्रोडक्ट की या हमारे जो रिटेल नेटवर्क है या हमारे पेंटर हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं मेनली, तो हम उनके थ्रू ज़्यादा हमारी वर्किंग रहती है। और मैं समझता हूँ कि इन बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में
जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आंधी में जो है उन्हीं पे इफेक्ट आता है, नीचे जो ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपना ग्राउंड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये बात तो ठीक है कि जब मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, कुछ कंपटीशन भी होगा, तो मैं समझता हूँ पेंट की जो ग्रोथ है, डिमांड हमारी फ्यूचर में जिस तरह से बढ़ रही है, तो कामधेनु के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कामधेनु को कोई हर साल 2-3 हज़ार करोड़ की सेल की ग्रोथ नहीं चाहिए। हमारे को तो अगले 5 साल में अभी जो 400-450 करोड़ की सेल है, इसको 1000 करोड़ करना है। तो दैट मीन्स हर साल हमारे को 20-25% की ग्रोथ चाहिए, जिसमें हमें हर साल लगभग 100 करोड़ का शेयर चाहिए। हर साल 5 से 10 हज़ार करोड़ की सेल बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ हमें कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर लास्ट में ये जो 20-25% की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये लार्जली किससे आएगा? वॉल्यूम से आएगा, प्रोडक्ट मिक्स से आएगा, कि रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट रहेगा? मेजर ड्राइवर क्या रहेगा सर, वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा कि प्रोडक्ट मिक्स रहेगा? देखिए, दोनों रहेंगे, प्रोडक्ट मिक्स भी रहेगा डेफिनेटली, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बिना वॉल्यूम ग्रोथ के तो ब्रांड का जो विजिबिलिटी है वो उतनी नहीं बनेगी। जितना हमारा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा उतनी ब्रांड की विजिबिलिटी आती है, उतनी एक्सेप्टेंस आती है। और साथ में फिर ये रहता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट हम कितने ज़्यादा इसमें मार्केट में एक्सेप्टेंस लाते हैं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो मेन ग्रोथ ड्राइवर है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। समझ गया। So sir, I'll join back in the queue for further questions. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Participants who wish to ask questions may press star and 1 on their touch-tone phone. The next question is from the line of Ms. Payal Shah from Investor. Please go ahead, ma'am. Thank you so much for the opportunity, sir. My questions are related to the paint business. So my first question is, even though oil prices have gone up, our raw material costs have declined on a YOY basis. So could you please comment on the same, like, yeah. मैम, जैसे मेरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो कामधेनु पेंट का जो मेन फोकस है वो हम वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और सॉल्वेंट का जो परसेंटेज है जो हमारा जो डिपेंड करता है कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर, जो इस साल हमारा 11% सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन है, और जो पुट्टी और अदर पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 6% हैं। तो आप देखेंगे कि जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो 83% है। नॉर्मली कोई भी कंपनी जो है ये 60-70% से ज़्यादा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करती हैं। सभी कंपनीज को पाउडर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है। कामधेनु ने शुरू से ही जो इवन प्राइमर या और प्रोडक्ट्स हैं वो भी वाटर बेस्ड बनाए हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, और उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्रूड की प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है सर, आ गया समझ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी अपना पेंट बिजनेस EBITDA पॉजिटिव हो गया है, तो आगे स्टेडी स्टेट में क्या EBITDA मार्जिन देखना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस? देखिए मैम, इस साल जैसे हम सोच रहे हैं कि जो EBITDA है हमारा इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी 6% है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, इस बार चूँकि Q2 में बारिश और फ्लड वगैरह एक्सेसिव ज़्यादा था पूरे इंडिया में, और कुछ स्टेट तो JNK और आपका उत्तरांचल है, इसके अलावा आपका हिमाचल है, काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेंज रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये दिवाली सीजन और इसके बाद के जो Q3 और Q4 हैं, होपफुली इसमें सेल्स भी इम्प्रूव होनी चाहिए, और मार्जिन जो है मैं समझता हूँ जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं तो कुछ ना कुछ EBITDA मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। होपफुली जो पहले H1 में है या Q1 और Q2 में है, Q3 Q4 होपफुली इससे अच्छा रहना चाहिए। ठीक है सर, मेरा दूसरा सवाल है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ
थोड़ा कम रहा है, तो ये फेस्टिव सीजन शिफ्ट की वजह से हुआ है या कोई और रीजन है ये रेवेन्यू ग्रोथ कम होने का? देखिए, ये रेवेन्यू ग्रोथ कम इसलिए रही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि 2-3 स्टेट्स में बहुत एक्सेसिव रेन्स रही है, जहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। और जिस एरिया में फ्लडिंग रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लड रही है इंडिया के बहुत सारे हिस्से में, एमपी में, नॉर्थ में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, इसके अलावा JNK में, तो वहाँ से काफ़ी इम्पेक्ट इसका आया है सेल्स पे। स्टिल बहुत सारे डिपो जो हमारे थे यूपी के, जहाँ पे उतनी फ्लडिंग या कोई इशू नहीं था, वहाँ से हमने इसको रिकवर किया है पूरा का पूरे सेल्स को। और मैं समझता हूँ कि ये दिवाली सीजन है, अक्टूबर की सेल्स हमारी सेटिस्फैक्ट्री रही है, और नवंबर ऑनवर्ड भी अभी मैं समझता हूँ कि ये इसी ट्रैक के ऊपर रहेगा। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफिकली कौन सा रीजन हम टारगेट कर रहे हैं जहाँ से हमारा मार्केट शेयर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, अभी तो नॉर्थ में कामधेनु स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पोजीशन है, क्योंकि नॉर्थ में हमारी यूनिट है, तो यहाँ से फ्रेट हमारे को थोड़ा कम उसी हिसाब से इकोनॉमिकल रहता है। तो यहाँ पे यूपी, पंजाब, हिमाचल, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो ये जो नॉर्थ की बेल्ट है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कामधेनु की है। और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में अभी हम मार्केटिंग नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं नए डिपो खोल के, तो वहाँ से धीरे धीरे रेस्पॉन्स आ रहा है, सेल्स बढ़ रही है वहाँ पे। और जैसे जैसे वहाँ पे सेल्स बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि उसी हिसाब से वहाँ पे हम मटेरियल यहाँ से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स डायरेक्ट अपने मेन प्लांट से दे सकते हैं। और जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, जो वो उसका कोई और मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि वहीं पे लोकली सोर्सिंग करके उसको सप्लाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ तीनों लेवल के ऊपर काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में आई थिंक दिस विल लुक गुड। Thank you so much, sir. Thank you for answering my question. Thank you. Okay. Thank you. Before we take the next question, we would like to remind the participants that you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Mr. Rajiv Mehta from AC Capital. Please go ahead, sir. Mr. Rajiv? Hello? Hello. Hello? Hello. Yeah. Thank you for the opportunity. Yeah. So I had a couple of questions. So, sir, could you throw some light on the demand scenario for the steel products and the paint business? And also, how has been the trend in the prices of the raw material? मैम, पहले मैं स्टील के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं कंट्री में, तो स्टील स्टार्टिंग में जो भी कंस्ट्रक्शन यूज होता है, और जब फिनिशिंग कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पेंट यूज होता है। तो जैसे आप देखेंगे, बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेलवेज का है, हाईवेज का है, हाउसिंग सेगमेंट में है, या और एयरपोर्ट्स हैं, तो जितना मेट्रो की काम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी तेजी से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है, स्टील की कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कामधेनु है, कामधेनु इज ए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। हम सिर्फ सेल्स या स्टील यूनिट नहीं है, हमारे पास जो एसेट लाइट फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहाँ पे हमारे पास पूरे अक्रॉस इंडिया मोर देन 80 यूनिट्स हैं स्टील के प्रोडक्ट्स की, जो TMT बार बनाती हैं, कलर कोटेड शीट बनाती हैं, पाइप्स बनाती हैं, अदर स्ट्रक्चरल स्टील बनाती हैं, बाइंडिंग वायर बनाती हैं। तो उनके थ्रू जिस तरह से हमारा ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो ये कंटिन्यूसली हम लोग अपनी डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी नई बिल्टअप कर रहे हैं, नया नेटवर्क, नया एरियाज में और स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं।
हालांकि पूरे कंट्री में कामधेनु का हर जगह पे, हर स्टेट में नेटवर्क हमारे पास है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं जैसे जैसे डिमांड आ रही है उसको मीट आउट करने के लिए। तो और इसमें जो आपने एक बात कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है, क्योंकि मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम रॉयल्टी से आता है और रॉयल्टी मेरी हर साल थोड़ा बहुत बढ़ रही है। मेजर जो ड्राइवर है मेरी ग्रोथ का वो मेरा वॉल्यूम है। जैसा हरीश जी ने बताया था कि इस साल हमने करीब 30-32 लाख टन की हम लोग वॉल्यूम स्टील के करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर 28-29 लाख टन का था हमारा वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है ब्रांड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, रॉयल्टी की इनकम भी बढ़ती है। और चूंकि ये सारी यूनिट्स हमारी फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं, तो मार्केट में जैसे प्राइसेस डिक्रीज या इंक्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में हमारी ना फ्रेंचाइजी यूनिट पे आता है ना कामधेनु पे आता है। कामधेनु की जो रॉयल्टी है वो पर टन बेसिस के ऊपर वॉल्यूम पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो आई थिंक जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कामधेनु की रॉयल्टी उसमें ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड है या बढ़ रही है, एक्सेप्ट के जो स्टॉक होता है उस पर प्राइस अगर बढ़ती है घटती है तो उसका इफेक्ट जरूर सबकी पीएनएल में आता है। और पेंट में जहाँ तक आपने कहा है कि पेंट में भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस तो पिछले काफ़ी दिनों से एक्सलेट नहीं हुई है, लगभग 6-7-8 महीने से प्राइसेस रिवाइज नहीं हुई है। और ये जरूर है कि आज सभी कंपनीज ने अपना फॉर्मुलेशन चेंज करके, क्योंकि ये R&D के थ्रू सब लोगों का ये एफर्ट्स रहता है कि हम अच्छा अच्छा प्रोडक्ट कॉस्टिंग कितनी कम से कम ला सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है आज की डेट में। तो उसमें सभी कंपनीज R&D पे काम करती हैं। तो इस पीरियड में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और फॉर्मुलेशन चेंजेस आए हैं, जिसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स भी चेंज हुए हैं, जिसका जो रेसिपी है इसकी, तो उस पर काम करके। और मैं समझता हूँ कि इस कंपटीशन के ज़माने में इसी के अंदर रह के सबको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ओके ओके एंड सर, so हमारा ट्रेडिंग बिजनेस में वी सीन नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड? स्टील की बात कर रहे हैं? यस, स्टील बिजनेस। देखिए, स्टील में हमारा एफर्ट ये रहता है कि जो अभी करीब 50-52 लाख टन की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी हमने बिल्डअप कर ली है थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, तो इसको हम हर साल 5 लाख टन के करीब एफर्ट्स कर रहे हैं कि नई कैपेसिटी बिल्डअप हो। और इसमें भी मेन फोकस या प्रेफरेंस रहता है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं वहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उन्हीं की कैपेसिटी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, बजाय इसके कि बहुत सारी नई यूनिट्स ऐड करें। तो पहला प्रायोरिटी रहती है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी नई बिल्डअप कर लें, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, मार्केट में सप्लाई भी इम्प्रूव होती है। और इसमें कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी का सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट रहता है इसमें पूरा का पूरा। तो इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी है, इम्प्रूवमेंट है, इस पे बढ़ता रहे। और दूसरी बात ये है कि आप B2B सेल्स की बात कर रहे हैं? या मैम, क्या है कि पहले जब तक हमारी ज़रूरत थी, जैसे जैसे हमारा B2C सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिन डेफिनेटली मार्जिन होता नहीं है B2B सेल्स में। फिर उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनको क्रेडिट चाहिए ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, तो उस पर फोकस B2B सेल्स धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सिर्फ वहीं पे है जहाँ पे उन्हें कामधेनु से डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, कामधेनु से इन्वाइसिंग, कामधेनु के थ्रू ऑर्डर रूट होते हैं या उन्हीं के थ्रू पेमेंट होती है, उतना काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारा पूरा एफर्ट है कि B2C सेल्स एंड यूजर तक हमारे रिटेल नेटवर्क के थ्रू वो जाए, बेस्ट सर्विसेज हो, बेस्ट प्राइसेज हो और बेस्ट क्वालिटी हो। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू।
It was helpful. Okay. Thank you. Participants, we would like to give you a final reminder that you may press star and 1 to ask a question. We will wait for a moment for the question queue to assemble. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. I would like to thank everyone for being part of this call. We hope we have answered your questions. If you need more information, please feel free to contact us or Mr. Devendra from SG, our Investor Relation Advisor. I would also like to extend my heartfelt wishes for Diwali and the upcoming festive season. Thank you. Thank you, sir. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.